A body standing at the top of a tower of 20-meter height drops a stone. Assuming g is 10 meter per second square, the velocity of with which it hits the ground is. Initial velocity u is 0, h is equal to 20 meter and g is 10 meter per second square, and final velocity is to be calculated. So, v square is equal to u square plus 2gh 0 का square plus 2 into 10 into 20, 400. v is equal to 400 का root 20 meter per second. Option A is correct. Next, a body is moving with velocity 30 meter per second towards east. After 10 seconds, its velocity becomes 40 meter per second towards north. The average acceleration of the body is 7 meter per second square under root 7 meter per second square, 5 meter per second square, 1 meter per second square. Suppose this is east, north, west and south. Initially, this is moving in eastward direction. This is 30 meter per second. Suppose this is vector A, and then it turns to north. This is vector B. वेक्टर ए की वैल्यू है 30, जो मैग्नीट्यूड है 30 मीटर पर सेकेंड ईस्टवर्ड, एंड बी इज 40 मीटर पर सेकेंड नॉर्थवर्ड. तो चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी विल बी, दिस इज वी ए एंड दिस इज वी बी वेक्टर, VA vector and VB vector. VB vector minus VA vector, और VA vector में से अगर VB vector माइनस करेंगे तो दिस इज VB vector and this is minus VA vector. VB vector and this is minus VA vector. इनको एडअप कर देंगे, मैग्नीट्यूड आएगा, डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड होगा 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर अंडर रूट, दिस इज 50 मीटर पर सेकेंड. टाइम इज 10 सेकेंड, टी इज 10 सेकेंड, हेंस एक्सेलरेशन इज डेल्टा वी, इसका मैग्नीट्यूड होगा टी 50 by 10, 5 meter per second square. C is correct option. A particle covers half distance of its total distance with velocity v1 and rest half with velocity v2. Its average velocity during the complete journey is. डिस्टेंस है ए टू बी, इसका मिड पॉइंट इज सी. सपोज दिस इज डी बाई टू एंड दिस इज आल्सो डी बाई टू. ये वेलोसिटी है ए टू सी इज वी वन एंड ए सी टू बी इज वी टू. टाइम टी वन ए टू सी विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड डी अपॉन टू वी वन, and similarly time t2 will be d upon 2v2. So total time is d t1 plus t2 and d upon 2v1 plus d upon 2v2, or
2V1 V2 is equal to d V2 plus V1. Average speed, total distance upon total time. Total distance is d and time is d V2 plus V1 upon 2V1 V2, and this comes 2V1 V2 by V1 plus V2. B is correct option.